Well, sorry, commemoration, commemoration stamp, the stamp um, issued in the memory of somebody, commemorative stamp भी बोलते हैं उसे. तो commemoration के माने आपको बताएं. To commemorate is to celebrate or to keep in memory. I'm so sorry, the previous video was somehow interrupted abruptly. So I did, you know, um, I continued with the word in the next video. और बाद में मैंने आपको बताया ये कि वो वीडियो पहले वाला इंटरप्ट हो गया था. तो um, ये दूसरा वीडियो मैंने कंटिन्यू किया है. इसमें हम वहीं से चल रहे जहाँ से छोड़ा था, बजाय इसके कि मैं उसको दोबारा से रिपीट करता, पूरा फिर से उसको वो करता, उसमें टाइम लगता. तो in order to save the time, you see, I have continued in the second part. Okay, now we come to the word donor. DONOR. Donor is a bestower. That is a person who makes a gift, who donates. A person who donates. And a donation is a gift or a present. A donation is a gift or present. और याद रखिएगा, donee, DONEE, donee is a person to whom a gift is made. A person to whom a gift is made. इस तरह के कई वर्ड्स हैं. यानी डोनर वो जो गिफ्ट दे, डोनी वो जिसे गिफ्ट दिया जाए. इसी तरह से इंटरव्यूअर वो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, और इंटरव्यूई वो जो के जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है. पेंशनर वो अथॉरिटी जो पेंशन देती है, और पेंशनी वो पर्सन जिसे पेंशन दी जाती है. सो देयर आर सेवरल वर्ड्स लाइक दिस. डिस्टेंस ये तो अपने नॉर्मल मीनिंग में यहाँ इस्तेमाल हुआ है. दैट इज एक्सटेंट और स्पेस. Then the next word is gong, Gong, gong. It means a heavy, sonorous, Sonorous, sonorous metal disc. A heavy, sonorous metal disc, जिसे घंटा या घड़ियाल बोलते हैं. Feud, FEUD, feud. Feud means mutual hostility. HOSTILITY. Hostility कहते हैं enmity को. Mutual hostility between tribes and families. Between tribes and families. Just a minute. These papers have got somewhat mixed. Wait a minute.
Yes, sorry, so sorry. In fact, the pages got mixed up, and as a result, you know, there was a delay of a couple of minutes. Please forgive it. Now we come to the word knockout. Knockout, it's a phrasal verb, and it means to destroy, to beat, that is to defeat. देखिए बॉक्सिंग में ये होता है नॉकआउट पंच. जैसे कि किसी बॉक्सर ने एक पंच लगाया तो अगला बॉक्सर गिर जाता है. अगर वो 2 मिनट तक गिरा रहा तो फिर वो मैच हार जाता है. इसी तरह से रेसलिंग में भी यही होता है. तो टू नॉक आउट इज टू डिफीट और टू डिस्ट्रॉय. एंड टू नॉक ऑन, ये नॉक ऑन द डोर जैसे खटखटाना. तो खैर हमें तो नॉकआउट से मतलब है इस वक्त. अब नेक्स्ट वर्ड म्यूचुअल, ये आप जानते ही होंगे. परटेनिंग टू टू और मोर पर्सन्स alike. Pertaining to two persons more or sorry, but pertaining to two or more persons alike. आपसी जिसे कहते हैं. लाइटनिंग, ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी just to remind you, lightning is the electric flash from the clouds. Electric flash from the clouds, बिजली. एक वर्ड इसमें शुरू में आया है ऑफ. ऑफ जो है याद रखिए एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन. तो इसके माने एट अ डिस्टेंस, टूवर्ड्स. ये हमारी पोएम में जो इस्तेमाल हुआ है, ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम. ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम से मतलब slightly away from the other's time, slightly different from the other's time. इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है अवे और डिफरेंट. ये मैं इम्प्लाइड मीनिंग बता रहा हूँ आपको, लिटरल मीनिंग नहीं. डिक्शनरी में नहीं मिलेगा. ये जो सेंस है उसका, एट अ डिस्टेंस से आप सेंस निकाल लीजिए. तो जैसे कि 2 घंटे एक ही जगह बज रहे हैं, एक पेरिस में एक लंदन में, लेकिन जाहिर बात है 2 अलग अलग टाइम दिखा रहे हैं वो. तो ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, थोड़ा सा दूसरे के टाइम से हटा हुआ है, दूरी पे है, अवे फ्रॉम वन. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज पेरिनियल. PERENNIAL. पेरिनियल मतलब नेवर एंडिंग. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज. प्रिसाइज आपको पता ही होगा, इसके माने हैं डेफिनेट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज राउंड. ROUND, राउंड. ये भी प्रेपोजिशन और एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. और इसके जो माने होते हैं, जैसे राउंड द क्लॉक हम कहते हैं, यानी एट ऑल द टाइम, या ऑल द ईयर राउंड मतलब थ्रू आउट द ईयर. तो इस सेंस में हमारे ये पोएम में इस्तेमाल हुआ है, यानी थ्रू आउट के सेंस में. नेक्स्ट वर्ड इज सीक्वेंस. इसके भी माने आपको मालूम होंगे. अ सीरीज ऑफ थिंग्स. अ सीरीज ऑफ थिंग्स.
Then the word seasonal, 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 seasonal. This means temporary, temporary, occurring in a season. जैसे कि कोई क्रॉप सीजनल होती है, माने कि फॉर एग्जांपल मैंगोज सीजनल होते हैं, अब तो हर साल भर मिलते हैं, वो अलग बात है। पहले जो खेती होती थी तो मैंगोज आपको जून से और अगस्त तक मिलते थे। अभी भी ये जो ब्लैकबेरी है ये सिर्फ अगस्त में मिलती है। बहुत सारे इस तरह की क्रॉप्स हैं जो सीजनल होती हैं, तो सीजनल टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड इज सायरन, SIREN, सायरन। सायरन के यहाँ पे माने हैं अ हॉर्न, हॉर्न, अलर्ट करने के लिए जो सायरन बजाया जाता है, जैसे पुलिस का सायरन होता है। नेक्स्ट वर्ड इज शो, SHOW, शो। याद रखिए, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शो इज टू अपीयर। अपीयर, ये मीनिंग हमारे पोएम में अप्लाई होता है। नेक्स्ट वी हैव विम। विम, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, WHIM, विम। Whim is a passing fancy or freak, FREAK, freak। आपको याद होगा ये वर्ड ट्रीज में आया था सन के लिए, इट वॉज अ whim of his to let the orchards grow। तो जब भी आपको डिटेल बताई थी, अब डिटेल नहीं बता रहा मैं, सिर्फ जो मेन मीनिंग है वो बता रहा हूँ। अ पासिंग फैंसी और फ्रीक, यानी सनक जिसे बोलते हैं। जिगजैग, इसके भी माने आपको मालूम होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। हैविंग शार्प टर्न्स, having sharp turns। So having a sharp turn, जैसे कि zigzag sky, sky zigzag जब होता है, सॉरी, sky zigzag जब होता है, जब आप you know when you when it is clouded, जब जब बादल छाए होते हैं, तो कहीं आपने देखा होगा बादल कहीं पे नहीं होते, कहीं होते हैं, कहीं पे गहरे होते हैं, कहीं पे ज़्यादा गहरे नहीं होते, तो वो स्काई जिगजैग हो जाता है, उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। नाउ लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन टू द पोएट एंड देन आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट द पोएम। थीम से आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। A.K. रामानुजन, इनकी डेट्स यहाँ पे दी हुई है, 1929 to 1993, so it's a recent Indian poet। A.K. Ramanujan is one of India's finest English language poets। He is best known for his pioneering translation of
ancient Tamil poetry into modern English. देखिए, pioneering translation, that is, he was the first or one of the first to translate ancient Tamil poetry into modern English. At the time of his death, he was professor of linguistics at the University of Chicago, and he, was recognized as the world's most profound scholar, having great knowledge of South Indian languages and culture. अब देखिए इनकी पोइट्री के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताया. हिज इंटरेस्ट इंक्लूडेड एंथ्रोपोलॉजी, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, and folklore, that is legendary tradition. These influenced his work as a craftsman. देखिए, तो एंथ्रोपोलॉजी और फोकलोर को इन्होंने बेसिस बनाया अपनी यानी क्रिएटिव वर्क्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्राफ्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए. This poem represents the complex distillation of a lifetime of unusual thought and feeling. So represents, जैसा आपको बताया, to be agent of, या this poem describes or depicts, क्या डिपिक्ट करती है ये? The complex distillation, the complex essence or gist of a lifetime of unusual thought and feeling. तो उनकी जो unusual thought और feeling थी, उसको ये रिप्रेजेंट करती है. ओके, नाउ देखिए पोएम जो है उसमें, द पोएम इज अबाउट द टाइम कीपिंग ऑफ वेरियस क्लॉक्स, एंड द पोएट सेज दैट डिफरेंट क्लॉक्स कीप डिफरेंट टाइम्स. आप देखें लंदन में टाइम कुछ और होगा, पेरिस में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है. तो अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम इसको समझ नहीं पाते. होता ये है कि समवेयर they are celebrating a donor's whim. Somebody has donated a fine clock, so they are celebrating it, for example, in Switzerland, and somewhere they are donating they are celebrating a fine clock given by somebody. आप किसी जगह पे देखें तो a maker's shaking hand, कहीं पे you know किसी somebody who has made or produced a very fine clock, तो मेकर वो हो गया क्लॉक का. शेकिंग हैंड से मतलब उसका घंटा जो है, उसकी जो जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, जिसको हम उर्दू में सुई कहते हैं, तो वो हैंड्स जो हिलते हैं, तो कहीं तो किसी मेकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं किसी डोनर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक ही टाइम पे. टाइम एक ही है, अलग अलग टाइम शो कर रहा है जगह जगह, तो उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको कमेमोरेट किया जा रहा है, उनकी सनक को. अब ये आगे एक्सप्लेन करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में, हिंदूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में जो फ्यूड्स हैं, जो हॉस्टिलिटीज़, जो एनिमिटीज़ हैं, वो पेरेनियल है, नेवर एंडिंग, और इनकी अलायंसेस सीजनल हैं, टेम्परेरी हैं. तो क्या होता है कि इनकी अलायंस जो होती हैं कभी कभी टूट जाती हैं फॉर डिफरेंट रीजंस. यू नो कभी कभी तो सरकमस्टांसिस की वजह से, कभी एटीट्यूड चेंज होने की वजह से, और कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है बैक स्ट्रीट पे, उसकी वजह से. तो इस तरह वॉयलेंस शुरू हो जाता है. अ, फिर जब वॉयलेंस शुरू हो जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? वन डे, यानी obviously it results in loss of life. Some people die, some people become eyeless. you know it causes damage to human life. लेकिन उसके बाद you see a zigzag sky showing through the knocked out clockwork after a rot. तो एक रॉइट के बाद दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये कि पीस मार्च निकाला जाता है कि भाई रॉइटिंग ख़त्म हो, लेकिन फिर कोई टाइम बम जो है वो ब्लास्ट होता है और फिर रॉइट शुरू हो जाते हैं. या फिर
सेकेंड थिंग होती है अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग, यानी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, द स्काई जिगजैग हो जाता है, और इस तरह नेचर हमें मैसेज देता है. यू सी द नेचर गिव्स अस अ मैसेज, इट डिस्ट्रॉयज द क्लॉक वर्क. इसीलिए इसको प्रिसाइज कहा है. वो अपना काम कर जाता है. क्लॉक वर्क जो है, क्लॉक टावर्स, जो जैसा कि आपको थीम में लिखा है, इट सिंबलाइजेस डिसहार्मनी, डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स. और इसी डिसऑर्डर की वजह से हमारे जो हमारे बीच जो राइटिंग है वो चलती रहती है, अलाइंसेस हमारी टेम्परेरी होती हैं, और होस्टिलिटी जो है वो हमारी परमानेंट हो जाती है. जब यूनिवर्स में ही डिसऑर्डर है तो जो जो भी क्रिएचर्स हैं यूनिवर्स में, उनमें डिसऑर्डर क्यों नहीं होगा? उनमें जो है वो डिसहार्मनी क्यों नहीं होगी? तो वो डिसहार्मनी बनी रहती है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो या ह्यूमन वायलेंस, किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, दैट कंटिन्यूज. अब होता यह है कि आम आदमी, जैसा कि आपको थीम में लिखा है, द कॉमन मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ नेचर. वो अब रिएक्ट करता है. पोएट का रिएक्शन जो है, आप जैसा कि हम देखेंगे कि इसने ह्यूमन सफरिंग को भी शो किया है, क्रिटिसाइज किया, एक्सेप्ट नहीं किया है, थॉटफुल लेमेंट है ये, कंडेमनेशन भी है. लेकिन कुछ हद तक ये the poet's attitude is the representation of how an average Indian feels both towards human violence and nature's fury. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एवरेज इंडियन भी, हमारे यहाँ एक बात मशहूर है, एवरेज इंडियन भी यही समझता है कि नेचर प्रतिशोध लेता है, बदला लेता है जब जब हिंसा होती है. सो दिस इज एन ओल्ड लेजेंडरी बिलीफ. तो ये जो पोएट का एटीट्यूड है, यानी नेचर्स फ्यूरी एंड ह्यूमन वायलेंस, ये बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है एवरेज इंडियन की जो थिंकिंग है. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू सी, initially we don't think that the poem is about human violence or disharmony. I mean, initially it seems as if it is about going to be time or something that keeps happening from time to time. So we will spot the line from which the meaning of the poem strike us, and we'll try to see why scientifically there is a difference in time keeping of the clocks of different places, and why is the nature's act described as precise. And then what reflects the poet's attitude? They have given some choices here. We would spot those choices. So you see, this in brief is a kind of a summary of the poem. I haven't explained the whole poem, but it must give you thorough idea of the poem itself. The theme is with you, the meanings are with you, and I've read about the poet also. It's not a very long poem. Um, I'll I hope I will you know be able to finish it in one sitting with you on Saturday. And if due to one reason or the other we could not meet, then I'd try to send it to you in the form of voice note. Because next Saturday would be 21st, and then we'll have another Saturday this month, 28th. But we'll not wait that long. Either we'll finish it on 21st, or if we could not, then I'll send you the explanation, try to send you the explanation in the form of a voice note as early as possible. But in any case, we should be able to complete our course by 28th of November, you know, so that after that, if you have any difficulties, you can keep asking questions or interacting me on WhatsApp. So I hope you get the point. Now, I think that's it for today. So प्लीज़ लिसन टू दीज टू वॉइस नोट्स. ये बीच में इंटरप्ट हो गए थे, उससे कंफ्यूज ना हो. दूसरे वॉइस नोट्स में
भी वोकेबलरी चल रही है, तो आप इसको दोनों वॉइस नोट्स को ध्यान से सुने और नोट डाउन कर लें. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अंटिल next Saturday. Please complete this work, keep studying, and prepare it um, before we meet next time so that you are able to grasp the entire poem. Okay? Um, right then, um, that's it for the time being. Take care and good luck to you. Thank you very much.